ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮੈਰੀ ਹਰਫ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵਯਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उधर भारत ने अमरीका ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ डिप्लोमेट देवयानी खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाई रोक के केस रद्द किया जाए। भारत ਵੱਲੋਂ मामले ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करना भी मुनासिब नहीं समझा। अमरीका ने भावें सारे घटनाक्रम ते अफसोस ता प्रगटा दिता है पर माफी नहीं मंगी। इस कांड बारे राष्ट्रपति बराक ओबामा नूं जाणू करवा दिता गया है। We very clearly have said every year in diplomatic notes to every country that has diplomats here throughout the world that there are obligations they have for their staffs when they bring them to the United States. We make those obligations very clear, and we take any allegations that they haven't done so very seriously. So certainly there's no discussion like that going on. We just want the process to move forward. So any suggestion that you would be putting pressure on the U.S. Attorney's Office to drop the charges is not true. The State Department doesn't charge people or drop charges. That's not an isolated episode. The Secretary certainly expressed regret that things weren't done differently at times. But what we're focused on, and why the Secretary and everyone else is so focused on this, is it is an incredibly important relationship. That has in no way changed. If you look at how we've worked together during this administration, certainly, which is what I'm familiar with, we have a broad and deep relationship. We work together on a host of issues, whether it's economic issues, trade, Afghanistan, other issues, and that is only going to continue to increase. So that's why what we're focused on is not letting this episode impact our relationship and indeed moving forward with it. देखिए, ये सरकार ऐसी सरकार है कि जैसा कि हमारे पार्टी के नेता अरुण जेटली जी ने कहा कि ये झाड़ पे चढ़ गई, पेड़ के ऊपर तो चढ़ गई। अब जो है उसने ये नहीं समझा कि पेड़ के चढ़ के उतरेगी कैसे, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। आज जो है वो आपका जो जिस तरह का एटीट्यूड और जिस तरह का रुख अमेरिका को लेकर इससे पहले रहा है, जिस तरह से आप अमेरिका के हर मुद्दे के साथ खड़े रहे हैं, अमेरिका के सामने घुटना टेकते रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डील रहा हो, चाहे रिटेल हो, या एक लंबी श्रृंखला है उसकी, तो उससे एक बात बहुत साफ है कि अमेरिका तो एक ऐसी घुटना टेकू नीति के और सरकार के सामने कैसे झुकेगा, ये तो समझ में हमारे नहीं आ रहा था, क्योंकि माफी मांगना पड़ेगा। ये एक असामान्य घटना है और न केवल भारत और अमेरिका की ये बात है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐसा उदाहरण है कि जिससे कि कोई भी जो है वो राजनयिक, कोई भी डिप्लोमेट अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। इसलिए माफी मांगने के लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए और कहना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है वो उनकी गलती थी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਵਯਾਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੰਗੀਤਾ ਰਿਚਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਡੈਨਾ ਸੁਜ਼ੈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। She understands that she's not the only one that is in a situation like she found herself in several months ago. And Ms. Richards sees the media coverage losing that piece of this story and not telling the story of the facts that gave rise to the criminal complaint. I think for the immediate future, Ms. Richard does not feel that she could go back to India and be safe there. But Ms. Richard never intended to remain in the United States, and she does wish to return to her home country eventually when it is safe for her to do so. Is that the State Department has given Ms. Richard a temporary legal status called continued presence that is issued to victims of human trafficking and only victims of human trafficking. ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ।
ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।